welcome Deepak ji. Uh, you have agreed to deliver lecture explaining the conservation and preservation and the chemical treatment and the related things. So we are highly obliged, and the students had exposure to lectures from Professor Shukla and some other experts on these topics of conservation and preservation of the manuscripts and the rock paintings and the cave dwellings and the paintings in the caves, how they have been preserved. But I think they don't have sufficient knowledge. And I can also understand that in such a short span of time, they will have only the preliminary understanding of what is all these things are, because the history of even the rock history of the preservation of rock paintings and cave dwellings, that is very, I should say, new, in the sense that from 1983 onwards, the attempts at all over world level being done by some experts to 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 discover the paintings and then to preserve them. In India, we know we have the rock paintings which are considered among top 25 paintings all over the world. That is at Bhimbetka, and our students, they have got some exposure to Bhimbetka's attempts. What were the attempts being made by Archaeological Survey of India, and the regional director of that area, Dr. Ota, who has been the student in Banaras University who had studied from here. So he gave an extensive lecture on Bhimbetka. But I think you have really an expertise on chemical treatment and related things regarding the maintenance, preservation, and conservation of the antique things. So I should not waste time, waste time in the sense that I should not be proving to be a wall between your lecture and my audience, the students who have joined here, the students of heritage management. So you may use both the languages, Hindi and English, to explain the things. So I welcome Dr. Deepak. Please start your lecture, sir. Thank you, sir. Thank you, Rakesh sir, and sir, all the students for giving me this opportunity. And actually, I hope I'm audible to all of you. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, sir. So, please, students, tell, is sir audible? So, I hope I'm able to share my screen. So you all can see all the students who have come to Bharat Kala Bhavan, and I had given you just a brief. It was not just an introduction of how conservator or a museum professional should actually see an object from the conservation point of view. So I won't be able to deal with all the chemical treatments and all in this particular class, because it's a huge topic, and as such it will require a lot of understanding from, like, you'll have to actually do it with it has to be done in a more practical way, and it will be a very exhaustive thing to
deal with it at this present lecture. So what I'm going to present to you before you is will be two PowerPoint presentations. One will be it will be based on both these presentations are based on what I discussed during your visit to Bharat Kalama. So as a conservator or as a budding conservator, the first and primary thing that you have to do is to first really observe an object. So when an object comes before you, you have to, the first step is in identification, not identification of the problem that the object has, but identification of what that object consists of, what are the materials it is made of, whether it's paper, if it's painting, whether it's, is it an oil painting, is it a watercolor, gouache, what all techniques are being employed, what exactly is what are the components of that particular object. If it's a wooden object, then what all components have come together to make that object. If there is glue that is applied, if it is just a, if it's a wooden object, then which kind of wood, what wood has been used in that. If it's a metal object, then what material has been used? Is it an alloy? Is it what all alloys are present? Panchadhatu hai, Ashtadhatu hai. So all of these assessments are the first step before you actually do the conservation work. So whenever an object comes before a conservator, the first few steps are to do a conditional assessment. It is again not a exhaustive report that one has to prepare. It always has to be a preliminary report. Based on this assessment, you actually move towards the more detailed analysis. So I will give you an example. This particular I had discussed in my, when you come to Bharat Club, I had discussed that some paintings are being painted on copper plates as well. So copper is generally, relatively speaking, a bit more stable material for paintings. So this when I had gone to CSMVS museum in Mumbai in 2019, I had seen this original object, and they were very kind enough to allow me to study it for just as an observer. So when you look at this particular painting, the title is Interior of a Tavern. So it seems to be relatively stable, but if you can take a look at the corners, there is observance of, we can observe some flaking. This painting has varnish on top of it. It is not easy to make out in this photograph, but whenever we talk about painting, uh, especially oil paintings, it is also important to make an assessment of whether varnish has been applied on it, because varnish will react differently. If you have not made that assessment, your treatment is going to cause more harm to the painting. And most of the time, oil paintings generally uh, are relatively stable. The most of the issues that they face is related with um, the varnish getting decayed. So that decayed varnish has to be removed, and there are multiple ways to do that. So this is just an example of the conditional assessment report. So every institution, every conservator has to start with a conditional assessment report. This exhaustive document that you see in front of you basically discusses. I hope you all can see this. So there are just first and foremost, you will have to mention the institutional accession number. So this subject is from CSMVS to CSMVS museum's accession number. Then its height, width, depth, everything, its weight, if it has a weight, obviously all objects will have a weight, the date of receipt, all period, material, medium, all of these are preliminary reports. So as a conservator, you have to understand that a museum documentation is not entirely a scientific document. For a conservator,
it is always it is an official document. So based on those official documents, you cannot start your chemical treatment or your conservation treatment, because most of these records, they have been recorded by non-conservators. They have been done by museum professionals, but they may not be as aware of conservational treatments or conservational terminologies as a conservator would be. So if an object is just simply mentioned as a painting, you cannot start your assessment based on simply on the that particular terminology. You have to go further than that. Have these you have to fill out. This is a very important document that you have to start with, and its importance cannot be you cannot um, neglect documenting the object properly, because if you will do that, then you will have issues later on with the institution. If something goes wrong, or if there is a discrepancy between you and the institution, then based on this particular document you can actually resolve the issues. Otherwise, the institution or the whoever the owner of that object is can actually claim damages from you. So the most important thing, the preliminary thing, is to first do a surface identification. So how do you do that? You have to, as I had mentioned in the museum visit, you have to observe the object, understand the basic few observable issues that you can actually identify. If there is dust, dust is an added, it is not part of the original object. Grease, dirt, discoloration, abrasion, wrinkles, scratula. I had discussed this with you during the visit. If the paint layer has any grease, anything, any observable identification marks that you can actually note down, it will be good for you. So based on these observations, you actually file your report and condition report. So this is one, I had worked on this particular painting, and I had identified few issues where exactly the painting had these issues that were. If you can take a look at the original painting, yeah. So while looking at the object will appear like this, but from a conservator's point of view, you have to break it down to these particular aspects. So that's just one thing. I will show you another. This PPT again is based on the observations made at CSMBS Museum Conservation Lab, and they were kind enough to provide me with these details. The copyright of this, all what you're going to see in this belongs to CSMBS and conservative institutions in Chhatrapati Shivaji Vastu Sangrahalaya Museum in Mumbai. So, as I had shown you, when an object comes before a conservator, the preliminary thing is to identify the issues that are there. So, conservator is supposed to examine the object, identify the issues. They also do a graphical representation of the object, which is also a very good idea to do that. First and foremost is definitely the photo documentation. The object has to be properly photographed, identified. Its issues has to be marked digitally as well as in textual format. There are various instruments to identify, to document the object. Here the conservator is actually doing an analysis of the object using
an instrument that basically identifies the um, different aspects of the object and how to relatively differentiate between. If it's an alloy, then this particular instrument actually breaks it down to its the components of the basic alloy, like the percentage of alloy. If it's a copper and tin, so the percentage of copper, percentage of tin, everything is broken down to its very basic elements. And these two paintings, they have been photographed not just with a normal camera but also using an infrared camera as well. Here you can see that the painting is being photographed using electron microscope. I mean, it's been uh, photographed using a infrared camera, as well as they are using different magnification techniques to uh, focus on different aspects. Uh, the painting. Here again, the painting has been photographed using infrared camera. This actually separates, and this particular painting has been X-ray. So this is an X-ray. This is an X-ray image of the painting. And again, this is a photography of the object using infrared camera. So these are different ways to identify the issues that may not be easily discernible using a normal camera or through our naked eyes. Again, these are some examples how a object actually appears and opens itself through different imaging techniques, and you can easily make out what all elemental issues are there present in the particular object. Another example here, it's a regular painting. I had also told you about the different techniques of examining the object. So it's not just through the observing it in the normal light. This particular object is being observed in normal light, and then through raking light. When you observe an object under raking light, the uh, object's different aspects, its degradation, or its you can examine it in far more greater detail. Here, monochromatic object, polychrome wood is being observed under a microscope, and here they are trying to identify and even examine the particular painting. Even the conservation treatment is being done under microscope. Yeah, I had discussed this during my visit, your visit to Bharathalan. When you observe, why we must observe these objects in under such using such instruments, is to go to the beyond our human eye has capability to identify the issues and probably make an assessment of what all treatment is required and how much the chemical treatments are required, what all treatments have to be employed. So this particular painting, basically, most of the pigment here is not present anymore. It's more or less gone. So the conservator will have to first have to consolidate the paint layer, and then uh, takes up the gap. Here you can see that the paint layer is almost gone. So the conservator will have to first consolidate the paint layer and then fill the difference between the original paint layer and the gap, and then apply the paint layers. And as I had mentioned during your visit, that the conservation treatment is always used
to using a reversible method. The conservation treatment that is being decided or that is going to be employed has to be reversible. So a future conservator can actually undo the entire work and uh, start the process again if that particular object requires conservation treatment. And this is a detail from this particular painting. Here the object is being identified using different magnetic. Here, this is the instrument that I was talking about, I had told you about, that provides elemental level of magnification or identification of what all objects are being, the object is made of. And these are the craculars that I had discussed in our visit, during our visit. So this crack layer has to be first consolidated, and only after the consolidation process is over that we can actually think about filling these cracks and then provide a layer of protection to the painting. And here you can see a metal object is being observed. It's first and foremost, it has to be photographed from different angles to identify each and every area of the object, and I mark the areas like I had done in the copper plate painting. If there is any loose area, that there are any object that requires immediate conservation, or the conservation treatment has to be applied based on these particular areas. Here you can see there is a accumulation of some soot, grime, or accretion, which is called accretion in conservation terminology. So these areas have to be marked, identified, and the conservation treatment has to be decided accordingly. The first and foremost is the most important criteria is to identify an object. Conservation treatment can never begin without identifying the object and what all treatment methods are available. So there are multiple methods that are available. मैंने क्लास नहीं ज्वाइन किया, क्लास चल रहा है. कोशिश करो. हॉस्पिटल क्यों आई थी बताया तुमने कि हॉस्पिटल में है? तुम्हारी सिस्टर बनारस में है क्या? देखो क्लास ज्वाइन करो, ऐसे बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा. ठीक है, सिस्टर को दिखाने गए थे, दिन भर दिखाओ. जब क्लास चल रहा है 5 से 6 तो उस पर क्या दिखा रही हो? तुरंत ज्वाइन करो. शुरू करें. Okay. I had discussed certain instruments that are used for identifying the environmental conditions. So, as I had mentioned previously, there are for organic materials, there are these three criteria, the three concerns that every curator has: light, temperature, and relative humidity. So that's a hygrometer that measures the relative humidity levels. It's an electronic one that also provides a graph of fluctuations or anything that is recorded. It is kept inside the room, so it provides a constant reading. Then there is a very old and traditional method of, and it's very flexible also. It's a whirling hygrometer that is used to measure the relative humidity. So that
what it basically has is that there are these two thermometers. One is a wet, one has a candle on it. It's basically a cloth or a wick that is damp, and the other one is a dry bulb. So the wet thermometer will actually will read the will have a lower temperature level, and it's rotated for a period of roughly around 1.5 minutes. And then there is this log table. You can see this log table basically has a reading that has been identified and recorded through through observations, and the difference between the wet and dry thermometer will provide a particular dew point level, and based on this log table you can actually measure the relative humidity that is present in that particular area. So this is very easy to use instrument, and it's also provides an approximate figure that we can rely upon. It's flexible, it's very cost effective, it's very relatively cheaper instrument to maintain. So most of the museums can actually afford it. Then the conservator's name is Omkar Kadu. He's employed in Chhatrapati Shivaji Master Sangrahalaya Museum in Mumbai. He's right now recording using a lux meter. The lux meter, what it does is records the level of light, the light that is falling on an object, which is measured in lux. So as I had mentioned during a visit to Bharat Kala Bhavan, that really sensitive objects, which are miniature paintings, any works on paper, are to be kept according to ICOM specification. They have to be kept under 50 lux, and up to oil painting, which have a coat of varnish on top of them, they can be kept to the maximum 150 lux, and uh, other relatively stable objects can be kept above 250 lux. But the parameters are generally they specify that light has to be light is definitely it's considered to be a necessary evil. So whatever illumination that is required to observe the object in its true colors without damaging the object is considered to be the most suitable light condition in which the object should be displayed. Uh, and another instrument that is used is it's called data logger. That's also a very handy tool that measures the relative humidity, the temperature, dew point uh, at regular interval. Here it has been set to measure the temperature relative humidity fluctuations at every half an hour. So, and it provides a graphical representation of these as well. So it's a very handy tool to measure relative humidity temperature fluctuations for a smaller area. Like if you want to measure the relative humidity fluctuation of a very sensitive object that has been kept in a showcase or in an almirah, you can actually use this instrument. And regarding the different instruments that are being used for conservation treatment, here this particular painting has excessive flaking. So the paint layer is uh, taking off, and here the conservator is actually using a nebulizer instrument to provide the the adhesive as a consolidant in a fume manner. So the fumes of the adhesive that is being employed, it provides a relatively more less invasive, more less destructive method for conservation treatment. And then the conservation treatment, here the conservator is actually filling the
gap, as I had shown you in the two previous slides. Yeah. As you can see, in areas like this, when an object has this much amount of damage, it is very important to first consolidate the paint layer, and instruments like nebulizer are far more easily available, and it's a very handy tool in the hands of a of an expert conservator to first consolidate the paint layer so that it doesn't flake off further. The damage is more or less stopped, and then the areas that needs to be filled are filled using natural material as only, and then the retouching expert artist or retouching conservator will retouch the area that require retouching. There, the artist is actually using a simple brush, and again, there another conservator is basically it's a Mughal painting. She is consolidating. So the area that she is actually consolidating has been damaged by a color called verdigris. हाँ As I had, बताइए गोपाल जी। जी। these are some of the instruments that are used for conservation using electron microscope. We had seen this in the presentation. And there is a stereo microscope that is used for conservation, identification, examination, magnification of an object. These are some other instruments that are used for conservation as well as for हाँ बस जी। ठीक है, अब आपकी आवाज़ आ रही है। अब डॉक्टर दीपक की आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर दीपक का आवाज बंद हो गई ना? हाँ, उनकी आवाज़ बंद हो गई। यस सर, आवाज नहीं आ रही है सर की। तो देखते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं कि क्यों नहीं आई है, बंद हुई है। आप अगर वहाँ लाइन पर हैं तो बोलिए, हम एक मिनट। आप ही बोल दीजिए, आवाज नहीं आ रही दीपक जी। बोल दे रहे उन्होंने। ओके आप सर। बोलिए। देखता हूँ सर। hello. डॉक्टर दीपक जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बीच में बंद हो गई थी। जी डॉक्टर दीपक, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, ओके सर, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया था, एकदम से नेट चला गया था। हाँ, अब आवाज आने लगी, आ रही। तो अभी आप लोगों ने कहा, मुझे ये पता भी नहीं चला कि कब आपका चला गया। जस्ट अभी 2 मिनट पहले। ओके, जिसे कह रहा था सर कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डिस्कशन चल रहा था। ऐसा मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए थे, क्योंकि CSMS म्यूजियम में वहाँ के कंजर्वेटर्स भी यूज़ करते हैं, और कई सारे म्यूजियम के कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप है, ये सब
जो है ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन के लिए और स्टीरियो माइक्रोस्कोप उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। मैंने ये भी कहा था कि कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि जैसे फ्यूम एक्सट्रैक्टर है, तो कंजर्वेशन में भी कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कुछ हद तक होते हैं, बट इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, फ्यूम एक्सट्रैक्टर जैसे है। फिर ऑब्जेक्ट जिनका उनको स्टोर करने का कैबिनेट्स हैं। ये जनरल ओवरव्यू है कंजर्वेशन लैब वर्किंग एरिया। कुछ ब्रशेस वगैरह हैं, चूल्हा है, ट्रेसिंग टेबल है। एक और मैं आपको डिस्कस करना चाहता था वो कि जो अलग अलग पेंटिंग्स से रिलेटेड जो कलर पिगमेंट्स यूज होते हैं, जैसे काला पीरियड के जो फैमिली मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनमें लैपिस लैजुली, रेड ऑकर, कार्बन ब्लैक वगैरह यूज होता है। जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनमें भी लैपिस लैजुली, गोल्ड, कार्बन ब्लैक, वर्डिग्रे वगैरह का इस्तेमाल का यूज़ होता है। वर्डिग्रे जहाँ यूज़ होता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये पेपर को आने वाला कलर है, बहुत एसिडिक होता है। तो जहाँ पे भी आपको अगर ये वर्डिग्रे का वो मिलता है एविडेंस, तो हमको इसको ध्यान में रखना होगा। कार्बन ब्लैक अपने आप में थोड़ा अनस्टेबल होता है। अभी हमको जैसे मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें कार्बन ब्लैक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका वो कहीं ब्लीड ना करे बहुत इजीली। ये ट्रीटमेंट करते हुए कई बार ऑब्जेक्ट में ये जो कलर है ये इसकी टेंडेंसी होती है कि वो फैलना शुरू करे, तो इसको स्टेबल कराना बहुत ज़रूरी है। सिनेबार जो है वो आपका मरकरी से बनता है, तो उसका ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो उसको यूज़ कर मतलब ट्रीटमेंट करते वक्त उसके फ्यूम्स वगैरह सब जो हैं वो भी स्टेबल रहें, बॉडी के अंदर ना जाएं। बाकी पहाड़ी नेचर में जैसे इंडिगो है, लैपिस लैजुली है, काफ़ी हद तक मिनरल कलर्स ही होते हैं, नेचुरल कलर्स ही होते हैं। इसके अलावा जो कलर पिगमेंट्स है, बबूल है, ये सब जो एडेसिव की तरह यूज़ होता है, इन सब का आइडेंटिफिकेशन, इन सब का तो हमारा जो ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी यूज़ होगा वो कहाँ तक ऑब्जेक्ट को नुकसान कर सकता है, कैसे ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट करेंगे, ये आइडेंटिफाई करना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कंजर्वेटर को केमिस्ट्री का नॉलेज होना तो चाहिए, साथ ही साथ उसको ऑब्जेक्ट की एस्थेटिक्स के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों का एक बैलेंस लेके चलना बहुत ज़रूरी है। प्योरली सिर्फ केमिस्ट्री का वो नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट का एस्थेटिक्स भूल जाएं, और एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। और साथ ही साथ जो कंजर्वेशन के एथिक्स हैं उनको उसका बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। बाकी अगर किसी को कुछ सवाल हैं तो देखें आस्क मी। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं कहूँगा कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से मैं श्री शिशु कुमार त्रिपाठी जी से कहूँगा कि वो अपने ऑब्जर्वेशन दें, और उसके बाद और भी रिसर्च मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं वो बोलेंगे। श्री श्री एस के त्रिपाठी जी, आप शुरू करिए। जी, जैसा कि अ, सभी विद्वान साथी लोग जानते हैं, पुरानी पेंटिंग्स और पुरानी ड्राइंग्स का कंजर्वेशन एक बहुत ही गूढ़ विषय है, और इसमें हर दिन नई प्रगति होती है। क्योंकि आज से 20 साल पहले हम जिन कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में जानते और पढ़ते थे, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गई है, और पूरा स्वरूप ही बदला हुआ है। किस तरीके से संरक्षण होगा, हालांकि आधारभूत सिद्धांत वही रह गए हैं। बहुत सारी
आपको यूरोपियन पेंटिंग में ऐसी पेंटिंग मिलेगी जिसमें ऑयल मीडियम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पिगमेंट का स्वरूप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले कुछ और था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कुछ और हो गया, तो उनके लिए अलग अलग कंजर्वेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनमें कंजर्वेशन करते समय वैज्ञानिक को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ पेंटिंग्स में ऐसे पिगमेंट यूज़ किए गए जो कि बाद में सारे कैनवास को काले करते रहे, और वो जिसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा वो चारकोल जैसे ब्लीड थ्रू करके आ जाता है और पूरी पेंटिंग काली पड़ गई। वार्निश का इस्तेमाल भी इसी तरीके से पेंटिंग की आयु कम कर देता है। तो एक संरक्षण करने वाले को बहुत ही सूक्ष्म निगाह से देखना पड़ेगा कि क्या तकनीक का इस्तेमाल किया गया है पेंटिंग में और कैसे सही की जानी चाहिए। इसके अलावा ये उसको उपलब्ध फंड्स, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर रिसोर्सेज पर भी आधारित है कि वो कितने सुधार संरक्षण के लिए कर सकता है, क्योंकि संरक्षण के पहले किसी भी पेंटिंग में अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसका भी सुधार करना आवश्यक होता है। जैसे कि विदेशों में माइकल एंजेलो की बड़ी बड़ी जो छत पर बनाई गई उसके चित्र हैं, उनका संरक्षण किया जा रहा है और बरसों से चलने वाला प्रोजेक्ट है। जैसे पिछले 15 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ, प्रोग्रेस उसकी आती भी रहती है। सिस्टीन चैपल में ये सुधार हो रहा है। इसी तरीके से भारत में भी जो अजंता एलोरा की पेंटिंग्स हैं, जो भित्ति चित्र हैं, उनका भी सुधार किया जा सकता है अगर ये परमिसिबल हो, क्योंकि वो उनके रंग रोशनी से बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि संरक्षण और पुरानी पेंटिंग्स की देखभाल करने में इंटरेस्ट लेने वाले विद्यार्थियों से कि वे कंप्यूटर की भी अच्छी जानकारी रखें, सॉफ्टवेयर की भी जानकारी अच्छी रखें। एक उनको मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स होना पड़ेगा, तब जाकर के एक संरक्षण का वातावरण उसे वो अच्छा निभा पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपके आदेश के लिए, आपके गाइडेंस के लिए प्रोफेसर पांडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों के लिए जानने के लिए मैं कहूंगा कि एस के त्रिपाठी साहब का बहुत बड़ा प्रशासनिक अनुभव रहा है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं और बड़ी कृपा है उनकी कि आप इसमें भाग लिए। और डॉक्टर वर्धन जो इसके एक्सपर्ट है, वो भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में इतना अच्छा, हमारे बीएचयू के ही हैं। तो मैं बहुत विद्यार्थियों से कह रहा हूँ हेरिटेज मैनेजमेंट की कि आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, तो आपका स्वागत है। आप बोलिए, अपने विचार रखिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, प्लीज प्रोसीड। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सब लोग प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो पेंटिंग्स हो, स्कल्पचर्स हो या कुछ भी हो, लेकिन उसको प्रिजर्व करने में एक अमाउंट भी लगता है। और उस दिन सर से इस बारे में बात हुई थी, सर ने बोला कि बहुत फाइनेंशियल सिस्टम बहुत सपोर्टिंग नहीं है। तो सर उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ वेज हैं? क्वेश्चन अगर मुझसे है तो मैं, जैसे मैंने आपको से कहा था उस दिन, कि कंजर्वेशन बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस इसलिए भी है क्योंकि जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निक्स यूज होते हैं वो काफ़ी मटेरियल्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इवन जो आपका एसिड फ्री एनवायरनमेंट आपको देना पड़ता है, एसिड फ्री पेपर देना पड़ता है, ये बहुत ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है, स्पेसिफिकली बनाया जाता है एक पर्टिकुलर न्यूट्रल एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट को देने के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ पेपर से लेके कंजर्वेशन ग्रेड के जो आपके जो मटेरियल्स यूज होते हैं, जो कलर्स यूज होते हैं, नॉर्मल मार्केट में आप देखें तो जैसे आपका एक्रेलिक कलर्स हैं वो आपको 150, 200, 300 के अंदर मिल जाएगा। तो लेकिन जब आपको जो कंजर्वेशन ग्रेड के जो कलर्स होते हैं, दे आर स्पेसिफिकली मेड, दे आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, उनकी कॉस्ट आपका बहुत हाई जाता है। तो इवन जो सिर्फ कलर्स का ही नहीं,
कई सारे जेल्स यूज होते हैं आजकल तो ट्रेनिंग में, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे गो इन लैक्स। तो ये जो पूरा कंबाइंड कॉस्ट आता है ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसका एक फ़ायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। नुकसान ये है कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंजर्वेशन को नहीं कर पाते। फ़ायदा इस तरीके से है कि अगर बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड्स यूज़ होने लगे तो जो कंजर्वेशन ट्रीटमेंट होगा उसका स्टैंडर्ड भी बहुत लो हो जाएगा। तो जो अपने आप में इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इस वजह से इसको शुरू करने में ही अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी सोच के साथ ही शुरू करना चाहिए। वेल प्लान होना चाहिए, अनप्लान को ट्रीट किया जाए तो ऑब्जेक्ट को, कल्चरल हेरिटेज को, उस इंस्टीट्यूशन को और आम जनता को, सबको के लिए बहुत नुकसानदायक है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। इसमें कंजर्वेशन में जो धन इन्वॉल्व होता है वो जितना ही एडवांस सोसाइटी होगी उतना अधिक कंजर्वेशन पर अपने पैसे लगाएगी, क्योंकि भारत भी एक धीरे धीरे बहुत एडवांस सोसाइटी होती चली जा रही है और यहाँ पर राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर संस्थाएं हैं जो अपने म्यूजियम्स हैं और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उन दोनों में पैसे सरकार बहुत दे रही है, लेकिन अभी भी और अधिक फंडिंग की जरूरत है। तो ये फंडिंग तभी होती है जब इसका सोशल अवेयरनेस बढ़े। अभी समाज में हमारे जो एंटीक थिंग्स हैं, जो हेरिटेज थिंग्स हैं, उनके प्रति अवेयरनेस आए कि भाई वाकई उनको क्यों प्रिजर्व और कंजर्व किया जाए, नई जनरेशन्स, नई पीढ़ी के लिए उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए और क्यों प्रिजर्व किया जाए, हेरिटेज मैनेजमेंट क्यों किया जाए। इस बात को जब आम लोगों के बीच में और जो आम और जो विशिष्ट लोग, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं या और भी तमाम प्राइवेट जो धनी लोग हैं देश के, तो वो लोग इसके लिए फंड ईयरमार्क करते हैं। इधर बीच भारत सरकार और प्रांतों की सरकारों ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी ही खोलने का प्लान किया है नोएडा में। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ये हेरिटेज मैनेजमेंट के लिए जो पैसे देने चाहिए वो जरूर देंगे और हम लोगों को इसके लिए और अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि अगर उनकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो वो अपना प्रश्न या जिज्ञासा रख सकते। हमें लगता है कि अब कोई जिज्ञासा या प्रश्न इन लोगों के मन में अगर होगी तो ये लोग बाद में भी प्रश्न रख सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपक को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर कंजर्वेशन के बारे में बताया। और अभी जो हमारे यहाँ भीमबेटका वगैरह के जो रॉक पेंटिंग्स वगैरह हैं उनके ऊपर कैसे प्रिजर्वेशन वगैरह किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उन सब पर भी लेक्चर हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक लेक्चर रॉक पेंटिंग्स वगैरह के कैसे प्रिजर्वेशन वगैरह किए जाए, इस पर दीपक जी का एक और लेक्चर होना चाहिए। तो दीपक जी, क्या कल एक लेक्चर आपका 5 बजे फिर हो सकता है? मेरा बस ऑफिस का थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज तो मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा मॉर्निंग में। जी यह है कि आज का लेक्चर आपका एक्सेलेंट था। तो क्या हम कल, मे आई रिक्वेस्ट यू टू डिलीवर लेक्चर, लास्ट लेक्चर टुमारो। ओके सर। Okay, so each and every student is invited to join Dr. Deepak ji tomorrow at 5 p.m. So thank you everyone, thanks everyone for joining the class, and thank you SK Sahab, SK Tripathi Sahab for joining us. Thank you very much. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.